screen, Yes, right? sir. Yes, sir. So in the last lecture, yes, sorry, in the last lecture, I have gone through those facts about the generation of computers. Um, that was very, very important. Okay, because in every examination, I can find two or three questions from that topic in type of examination. They used to ask that the type one or then that generation, second generation, or the AI based generation. Which one is that? So this type of questions are asked. Okay, and what is the first computer that has been designed by whom? With the father of computer? Like this type of questions are asked in competitive examinations. So in the last lecture, everything being covered. So go through it if you have not already. So today's topic is types of computer. Right. So computer types, we have different types based on either construction or configuration. মানে কি কৈছো? What I am saying is that on the basis of construction, you can divide the computer into different types, and on the basis of configuration also we can divide it. एंड कंस्ट्रक्शन का मतलब ये है कि आप क्या यूज कर रहे हो, ठीक है, उस कंप्यूटर को मैन्युफैक्चर करने के लिए आप क्या यूज कर रहे हो. एंड कॉन्फ़िगरेशन मीन्स क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड किया गया है. ओके, जैसे आप बोलते हो कि रैम ये है, रैम 4 GB का है, 6 GB का है, 8 GB का है, लाइक दैट. So on the basis of construction and on the basis of configuration, we do have different computer types. You can see from this diagram, from this figure, that on the basis of constructions हमारे पास क्या क्या है? Analog, digital and hybrid. ठीक है सर, एक बार मनोज रखी जाएगा. You can take screenshot also. Okay, on the basis of construction, how many types we have? We have analog, we have digital and we have hybrid. ठीक है. Then next on the basis of configuration. जैसे मैंने कहा configuration मतलब क्या है? What are the configuration means based on the facilities and the technologies being used. Okay, like micro, laptop, palm top, mainframe, mini frame, and supercomputer. ठीक है, माइक्रो, लैपटॉप, पाम टॉप, मेन फ्रेम, एनी फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर. तो मैं पूछ सकता हूं आप लोगों को एमसीक्यू फॉर्म में कि दिस टाइप लाइक मेन फ्रेम, mini frame, this type of computers being classified on the basis of what? Construction or configuration? So what will be the answer? Configuration, sir. Okay, very good. So analog computer, okay, means you can, I think your generation might miss this one. So analog computer look like this one. So from the term analog, can anybody of you tell me what do you mean by it? एनालॉग का मतलब क्या है? कोई भी बता सकते हैं? व्हाट इज दैट एनालॉग मीन टू यू? Okay, that is electrical wave based. You know, digital means what? Zero or one. ठीक है. तो एनालॉग एक वेब फॉर्म में, कंटिन्यूअस वेब फॉर्म में जा रहे हैं. तो आपको याद रखना है, whenever I use the term, we use the term analog, this means we are referring some continuous wave, like continuous electrical or physical. But the term continuous should be there with respect to analog. तो एनालॉग के सामने क्या टर्म रहेगा? सब जन बताओ. कॉन्टिन्यूअस. ठीक है, विदाउट ब्रेक. अभी मैं आप लोग क्लासरूम पे रहते तो बता देता ड्रॉ करके. ये सब इमेजिन कर लो आप लोग कि जो जो वेव वेव तो जानते हो, ठीक है, जो कॉन्टिन्यूअसली जा रहे हैं आपका विदाउट एनी ब्रेक, उस उसको हम क्या बोलते हैं? एनालॉग. दैट पर्टिकुलर line which is been drawn without any break, that can be considered as an analog one. तो फिर से रिपीट कर रहा हूं, एनालॉग इज ऑलवेज रिलेटेड टू सम कंटिन्यूअस टाइप. ठीक है, like current, voltage, flow, temperature, length, pressure, everything comes under this analog.
तो आपके जो करंट है तो ये किस में आएगा, इलेक्ट्रिसिटी करंट वेव एनालॉग में, ठीक है। तो पर्पस क्या है, मोस्टली एनालॉग कंप्यूटर्स आर स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स, नॉर्मली दे आर डिजाइन टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क बट नॉट मल्टीपल टास्क। इसका मतलब ये है फॉर मल्टीपल टास्क वी डू नॉट यूज दिस एनालॉग कंप्यूटर, ओके, वी यूज ओनली फॉर सम स्पेसिफिक टास्क, ठीक है। एंड की कंपोनेंट ऑफ एनालॉग कंप्यूटर इज द operational amplifier and a computer's capacity is determined by the number of amplifiers. ये जो amplifier हम यूज करते हैं, I hope you might get it in your higher secondary, okay, and also class 10, I think, that what is the task of an amplifier, ठीक है। एम्पलीफाई क्या करते हैं, उस सिग्नल को एम्पलीफाई करते हैं, ठीक है। तो ये जो एनालॉग कंप्यूटर है, इसमें इसका कैपेसिटी हम किससे डिटरमाइन करते हैं, द नंबर ऑफ एम्पलीफायर्स बीइंग इंक्लूडेड देयर, ठीक है। लाइक योर रिस्ट वॉच इफ नॉन डिजिटल, ठीक है। रिस्ट वॉच तो डिजिटल वाला भी होता है, बट नॉर्मली हम रिस्ट वॉच नॉन डिजिटल यूज करते हैं, ठीक है। योर कार्ड, स्पीडोमीटर, प्रेशर, टेम्परेचर एंड फ्यूल causes everything are or everything may be considered as analog computers. Then यूज क्या है, अभी मैंने बताया आप लोगों को कि एक स्पेसिफिक टास्क के लिए स्पीडोमीटर है, किस लिए हम यूज करते हैं, व्हाई वी यूज स्पीडोमीटर, जस्ट टू व्हाट, find out the speed, right? Then, so the output of an analog computer is often an adjustment to the control of a machine, such as an adjustment to a valve that controls the flow of steam to a turbine generator. ठीक है, इस टाइप का बहुत सारे काम है एक स्पेसिफिक काम को मेजर करने के लिए। जैसे आपकी घड़ी आप किस लिए यूज करते हो, ठीक है। तो इसी तरह आप समझ सकते हो कुछ जो आजकल के आपका ऑयल जो स्टेशन है वहां पे भी जो हम कंप्यूटर यूज करते हैं मैक्सिमम टाइम दैट दैट इज एन एनालॉग वन, ठीक है। सो देयर आर मेनी यूजेस ऑफ इट, सो टू एंड थ्री आई हैव प्रिफर्ड, यू मे find out the others, but basically do remember key for analog computer we actually deal with some specific tasks, not multiple tasks. An analog is related to continuous wave. Then we have our digital computers. You already been accustomed to this type of computers, like your laptop, okay, your PC, your tab, like that. So digital computers we use or we design it to perform daily routine tasks like you are going to write letters, to send emails, to perform some calculations. Okay, so for these tasks we use digital computers and we can perform multiple tasks with a digital computer. आप अपने ये टैब के साथ बहुत सारे टास्क इकट्ठा कर सकते हो, यू कैन परफॉर्म अ लॉट ऑफ टास्क साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम. So digital computer is not restricted to one use, it can be used for many purposes. And if we talk about the key component of digital computer, of course we have IC or integrated chips. Now, can you tell me from the last lecture that which generation of computer use IC? Last from the last lecture, can you tell me the जो क्या इस वो जनरेशन को क्या बोलते हैं, किस जनरेशन का बोलते हैं हम जब हम आईसी यूज करते हैं? आई थिंक मैं अगर फ्रैंकली बोलूँ तो आप लोगों ने लास्ट वाले लेक्चर्स का क्वेश्चन बिल्कुल अटेंड नहीं किया, प्लीज कर लेना, ठीक है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कितने लोग अभी प्रेजेंट हो, एक एक करके नाम बता सकते हैं आप लोग? यस, ओके, मुझे देखना पड़ेगा, ठीक है। ओके, कृष्णमणि, हैव यू Yes, अटेंडेड sir. द लास्ट लेक्चर?
सी यू डोंट नीड टू वरी अबाउट मैं आप लोगों को कुछ ये नहीं कर रहा हूँ आप लोगों के लिए ही बोल रहा हूँ जो भी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना दिस क्वेश्चन आर इम्पोर्टेंट फॉर यू চবেই কুৱেশ্যনখিনি কৰি যাবা ঠিক আছে মৎস্য প্ৰাগজ্যোতি Yes, sir. সঞ্জয় ফুকন ঠিক আছে all of you now after this lecture you will go through the last lecture and answer the questions and I will also check them personally and also because only 5 students are present in this class what happened to other krishnamani बाकी सब कहाँ है Sir, I don't know, sir. एक मैसेज व्हाट्सएप ग्रुप में आप छोड़ देना कि क्यों क्लासेस अटेंड नहीं किया प्लीज अभी छोड़ दो अभी एक मैसेज लिख दो व्हाट्सएप ग्रुप में व्हाई यू हैव नॉट जॉइन द क्लास Okay, ये sir. कुछ समय से मीटिंग के कारण आज भी मेरा एक वर्कशॉप चल रहा है फिर भी मैं वो वर्कशॉप को थोड़ा सा ये करके यहाँ अटेंड कर रहा हूँ तो प्लीज ठीक है जब भी टाइम मिले मैं मौका मिले ये क्लासेस लेता हूँ आप लोग अटेंड किया करो ठीक है तो ये एक मैसेज अभी के अभी कृष्णमणि ग्रुप में छोड़ दो ठीक है प्लीज लीव ए मैसेज टू द ग्रुप why they have not joined and ask them to join immediately and ask them to attend the last lecture and all the questions okay Okay, sir. so can I continue the class Yes, sir. okay so my question was that what is that generation of computer who is use IC and I'm not going to answer it you will go through it and you will let me know okay so personal computers your Sir, laptop I have not watched the last lecture, but I think this is the third generation of computer that uses IC. okay Krishnamani no Yes, sir. well try but please do confirm it okay Okay, sir. but I want to listen I want to have some confidence in your answer चाहे वो सही हो या गलत हो कॉन्फिडेंटली बोलना ठीक है आप Okay, लोग sir. फर्स्ट सेमिस्टर में हो अभी से आपको वो डेवलप करना है बट आपने आंसर दिया दैट इज वेरी गुड okay so Okay, sir. next thing why we use this no need to say that because one task that we frequently use like right now I am presenting my slides to you I'm presenting slides to you means क्या मैं पावर पॉइंट यूज किया ठीक है या तो गूगल स्लाइड जो आप लोगों को वहां पे दिखा रहा हूँ उससे हमने क्या बनाया अपना स्लाइड तो भी ये क्या हो गया एक वर्ड प्रोसेसिंग का काम हो गया या तो आप वर्ड में भी ये कुछ डॉक्यूमेंट्स बना सकते हो तो वर्ड प्रोसेसिंग इज वन काइंड ऑफ यूज देन अकाउंटिंग फॉर अकाउंटिंग मीन्स यू नो we use this type of computers for to keep some payroll records okay to print some paychecks billing customers ये सारे चीजों के लिए भी हम यूज करते हैं ये these things are coming under accounting then record keeping tasks also okay we used to maintain some digital registers right then industrial uses also because with the help of this digital computers we can replace the tasks of 100 men with single computer right and in research that is means in science this is the one where we actually or largely dependent on ठीक है तो साइंस में तो हम यहाँ यूज करते ही हैं डिजिटल कंप्यूटर्स ठीक है तो ये सारे यूजेस में हम क्या ये सारे यूजेस के लिए हम डिजिटल कंप्यूटर यूज करते हैं तो आई होप नाउ यू गॉट द डिफरेंसेस बिटवीन एनालॉग कंप्यूटर एंड डिजिटल कंप्यूटर राइट Yes, sir. ओके ओके गुड सो नाउ आई कम टू हाइब्रिड कंप्यूटर हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है ठीक है तो हाइब्रिड टर्म को ध्यान से देखना ये जो टर्म है दिस टर्म विल बी फ्रीक्वेंटली यूज इन आवर कंप्यूटर साइंस हाइब्रिड का मतलब ये है व्हेन वी कंबाइन two or three different features or when we combine two or three different technologies then that single one which being generated with this combination is known as hybrid one মানে মই কি কৈছো দুটা তিনটা বেলেগ যদি টেকনলজি আমি কম্বাইন কৰো বা দুটা তিনটা যদি ফিচাৰ্ছ আমি কম্বাইন কৰোঁ যিটো এটা হয়
সেইটোক আমি কি বুলি কওঁ हाइब्रिड। ठीक है, दो तीन जो टेक्नोलॉजीज हैं उस चीज को कंबाइन करके जो नया टेक्नोलॉजीज हम बनाते हैं ना उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हाइब्रिड। ठीक है, तो ये हाइब्रिड कंप्यूटर का मतलब ये होगा हम यहाँ पे कोई एक दो तीन चीजों को इकट्ठा यूज कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आप ये डायग्राम से देख सकते हो, ये फ्लैशिंग या कंप्यूटर भी यूज हो रहा है, साथ में ये जो मैनिपुलेशन हो रहा है, ठीक है, इसका हार्ट बीट्स वगैरह ये सब चेक हो रहा है। सो एवरीथिंग बीइंग कंबाइंड बीइंग फॉर्म ए सिंगल वन, एंड दैट इज व्हाई दिस वन इज हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, तो a computer which possesses characteristics of both analog and digital computers is known as hybrid computer. So एनालॉग हमने देखा कि एक स्पेसिफिक टास्क के लिए यूज किया, जैसे आपने रिच वॉच यूज किया टू फाइंड आउट द टाइम। सिमिलरली यहाँ पे हार्ट बीट के लिए कुछ चीज यूज किया हमने। उसके साथ साथ डिजिटल मतलब वी आर ट्राइंग टू कन्वर्ट दिस इनटू ए ग्राफ with the help of this process input. For that I am using, we are using this digital computer. So we now combine this analog and digital, and ये दोनों को combine करके जो कंप्यूटर मिला है हम उसको क्या बोलते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर। Is this definition clear to you? What is hybrid computer? Yes, sir. Yes, sir. Very good. So if we have been asked about the examples of hybrid computer, then they are like cement plant, ECG machines, CNG pump। ठीक है, ये सब है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर, क्योंकि यहाँ एनालॉग मतलब कुछ स्पेसिफिक टास्क के लिए यूज कर रहे हो, और वो जो इनपुट ले रहा है एनालॉग कंप्यूटर से उसको प्रोसेस करके जो हम डिजिटल आउटपुट प्रिंट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। तो ये दोनों को कंबाइन करने के कारण इसको हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, the digital computer, analog computer, and hybrid computer. They have been classified on the basis of what? किसके बेसिस पे हमने क्लासिफाई किया ये तीन? Sir, configuration. Construction or Construction. configuration. Okay, Yes, পাহৰি sir. নাযাবা, ঠিক আছে। Mm. On the basis of construction, we have Construction. this three: analog, digital, hybrid. ঠিক আছে, so এই তিনিটা বুজি পালা চবে? বুজি পালা? Yes, sir. Is this clear? Yes, sir. So आज कारण मैं तात्कालिक आग्रह कि आज ही ऐसा क्वेश्चन दी और एक क्वेश्चन दूंगा आज, अभी 5 मिनट में, और सभी लोग आप सभी जन इसका आंसर दोगे, तब ये मिल जाएगा आपको लेक्चर वीडियो। ठीक है, Okay, sir. और वो क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय ए हाइब्रिड कंप्यूटर? व्हाट डू यू मीन बाय हाइब्रिड कंप्यूटर? एंड राइट एन एग्जांपल ऑफ द सेम। इज माय क्वेश्चन क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Thank you for attempting the session. Thank you very much. We'll meet in the next session. Okay, bye bye. Thank you, sir. Thank you, sir.